can use any other source image, okay, instead of just using this what I'm using. Okay, so you can have your own set of images. Only thing is that certain operations require certain types of images or certain depth. So accordingly, you need to choose the image of the similar depth. So usually we are going to use most of the images which are going to be 8-bit, and either it is going to be multi-channel or it is going to be gray shade. If it is not going to be gray shade, then in that case we will try to convert them into the gray shade, and then we will try to use them. Okay, so that's the basic idea that I am going to have as far as the concern this particular practical is concerned. So as we both numpy as np, this is going to be one thing. Then I'm going to have from scipy. Okay, I say import signal, and I will also use miscellaneous, and I will say end image. Okay, so these are some of the practices and the library that you will use. And in fact, we have been using it all together in our previous what is say practicals also. So all those same libraries are going to be there, and then I will use from sk image. Okay, I say import filters features, and then I will say image as float. Okay, so img as float. Okay, so this is going to be used, and then for input output I will say from sk image dot io I say import I am read. Remember, if this sk image, scipy, and numpy is not there, then in that case you will be getting error. So you need to install them. So in order to install them, what you need to do, pip install and the package name. Okay, so that is what is basically the idea that we are going to have here. So this is being done, and then I say from sk image color. Okay, so basically for converting your RGB to gray color, so I will say import RGB to gray. Okay, and then if you are using the PIL, that is the pillow, specifically to apply the image filters, so I will just use from SK image. Okay, नहीं, from SK image PIL use कर रहे हैं ना, PIL import image, and I will say image filter. Okay, so these are basically case sensitive. Okay, so you have to be a little bit careful about this. Image filter हो गया. Then I will say import matplotlib. This is basically used for plotting the figures. Okay, matplotlib pylab. Okay, as pylab. Okay, so matplotlib.pylab as pylab. So let's see. Things are okay. Okay, so I think it should be. Now we say we are going to define our plot function. Okay, so plot image function. I say def plot underscore image comma title. What happened? SK image import filters features image as float. Okay, what happened? Cannot import the name features. Acha, features. Okay, that is fine. Okay, so this is the same function that we have been using. पहले भी हमने लिखा हुआ है pylab dot I am show. Okay, image. If you don't want to use it, that's absolutely fine. You can directly plot the figures. Title, and then I say size equal to 20, and then I say pylab dot axis off. Okay. This is your figure
function for plotting the image. क्या बोला इसमें? Cannot assign the function to a call pylab. Pylab dot I am show image. अच्छा अभी यहाँ पे क्या वगैरह आ गया? Import name image from PIML. I said no, it is case sensitive. अब क्या बचा? Pylab.image show cannot assign a function to call. Okay. Minute. Pylab image show, Pylab title. It should be अच्छा यहाँ पे Pylab dot title, and I have to specify the title. Yeah. You check karo. Yeah, I think now it is okay. Let us now move ahead, and now we will be basically trying to implement our things. So now what we do, we say let us try to apply different edge detectors. Okay. Remember, they are going to be first order derivative. अगर आपका है तो Previtt, Roberts, and Sobel, and so on. Okay, so there are different types of edge detectors, and you can basically use the image, uh, and depending upon the image and the type of image, you will see that you need to either convert into a one format to the other format. Okay, so I'll just use the standard image that we had, image dot open, and I say in my images folder, okay, I had an image called as rajesh.png. Okay, now depending upon the PNG or JPEG, you'll see the different functions and the different format conversions have to be used. Okay, so I say convert, okay, L. Okay, so L type हो गया आपका. Now it is ready to be used. I say pylab dot gray. Grayscale image हो गया. If it is a multi-channel, in fact this image is a multi-channel image. Okay, so we are converting into basically we are going to have the grayscale image and उस पे हम operate करने वाले हैं. So all things are going to be in that format. So I'm saying pylab dot gray, and I say pylab dot figure. Okay, I say figure size equal to जो भी आपको साइज देना है आप दे सकते हैं. Let me say 15 by 15 हम दे देते हैं इसको. So ये हो गया आपका और you say yes, just so 15 cross 15 आपने दे. So if you want to make it smaller or bigger, you can accordingly give the size. Now I will say pylab dot subplot, and इस टाइम से 3 cross 2 कर रहे हैं हम लोग, तो 3 2 and उसका फर्स्ट इमेज. ओके, सो 3 2 1 भी लिख सकते थे या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आई से plot underscore image. I am calling my own function and I am passing original image पहले, and I will give original image. ठीक है, ये हो गया आपका पहला इमेज. 3 cross 2 में से पहला इमेज ओरिजिनल इमेज, एंड देन वी विल ट्राई टू अप्लाई द फिल्टर्स. नाउ वी विल से एज हम फाइंड आउट करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई रॉबर्ट्स. मास्क, ओके, रॉबर्ट्स फिल्टर. सो हम यहाँ पे करेंगे लेट्स से edges equal to filters dot. Okay, so we are having basically filters, okay, from the SK image, and I'm going to use the filters from SK image, and filters has got many filters. So I'm saying filters dot Roberts. Okay, and Roberts of what? You have to calculate original image.
So you have calculated the Roberts applied the Roberts mass onto the original image, and this should have given you some edge. Now let us just try to plot. Okay, I say pylab dot subplot. ये हमने पहले वाला कर लिया ना, या ये सेकेंड वाला होगा subplot. This is going to be 3x2 का second image, and I will say plot underscore image, and this time modified image, that is edges, and I am saying this is Roberts edge. ठीक है, let's say this. एक मिनट plot करके देखें. Okay, so yeah, this is original image. Module has no attribute axis. Axis AXIS. Axis. What's your name? ये क्या बोलता है रॉबर्ट? I am a devil of my work. Let's just try this. This video हो गया आपका. और we are going to have the next one. Okay, so this is going to be, say, there are different types of filters. We have a filter called as Schar filter, SCHARR. So I will apply the Schar filter, SCHARR. Okay, and this is SCHARR filter. Then we will have next one, which we will say दूसरा क्या है आपके पास, सोबल में हम कहेंगे सोबल एज, and this time 3x2 का ये 3 था, सोबल आपका 4 होगा. Okay, this is सोबल. Then you will say सोबल के बाद हम एक बनाएंगे privet, and privet के लिए you will say privet mask, PREWITT, privet. Okay, so this is privet. Okay, so now let's say sobel edge हो गया. Now this is privet, PREWITT, privet. Okay, and then we will also calculate the Laplace. So I say Laplace. Okay, so edges equal to np dot clip filters. Okay, sorry. Filters dot Laplace of original image and default parameters. ये हो गया आपका What's your name? Laplace. So edges equal to np dot clip, and then you have filters dot Laplace and image, and then you will plot that. Okay, so ये 4 हो गया और ये हो गया 5, and now you will have 6. Okay, so plot images, and this time this is going to be Laplacian edge. And then you will just say pylab dot subplot. Okay, you have a function called as an adjust.
okay, which will adjust the horizontal and vertical spaces. So I have W space equal to 0.1. Okay, if you don't use it, the default spacing will be taken 0.1. So even if you don't use it, that is fine. ilab dot show. Okay, this is the general code that you are going to have. Now let us try to find what is the error. Okay, so here filters dot roberts image, filters dot roberts image में error आता है, and this is basically talking about mask. Find the this d type equal to false. Okay, d type. Okay. Let us see rajesh.png. Okay, okay, एक बार ट्राई करके देखते हैं. सर हाँ, सर वो फिल्टर सोबल होगा ना, आपने FILT सोबल लिखा है, let me फिल्टर सोबल इमेज. एक मिनट. Roberts, wait. अच्छा, filters सोबल, filters hot. ओके, वो लेकिन वो वहाँ का मैटर नहीं है, वो यहीं का मैटर है. ओके, से Roberts has to be taken care of. वो Roberts पे ही एरर है. जस्ट अ मिनट. रॉबर्ट्स को अगर मैं फिलहाल निकाल दूँ तो ओके, आई थिंक इमेज फॉर्मेट का इशू है. Just a minute. Let me figure out. Okay, suppose if I am saying um, let me say images image dot open, and let me say taj dot png, and let me check this out. So dimension of the image is having the problem. Parameter image must be a two-dimensional array. So convert तो होना चाहिए ये. So what did I not do? Just a second, huh? Just that's why we have converted it. Image dot मैंने सब रन तो किया है. So it should have given that. One minute. Huh? Roberts is having a problem with this. Let me just say image dot open. हमारा अगर RKM वाला ले लें तो I take that RKM वाला. One minute. So if I just say IMG invalid by that got gray. Pilot dot gray में error है.
filter में image parameter must be two-dimensional array. This should have been okay, but still. ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में. Just a minute. तब तक हम दूसरा करके देखते हैं. Let us try to use the Sobel one by one. Okay. Let us say image हमारा यूज करते हैं से Sobel edge detector with circuit. So let me say image equal to image dot open. I say images slash Rajesh dot png. Okay, and that convert L. Long में convert कर लिया हमने, ये हो गया. And then I say pylab dot grave figure size same लेते हैं यहाँ से. Okay, ये हो गया pylab dot grave. Okay, and then we will plot the original image. So let me say pylab dot figure fig size equal to 15, 15. Okay, so pylab dot, let's say this time cross 2x2 image. Okay, 2x2 का first image. Pylab dot subplot 2x2 का image, and here we will plot image I am comma original. ये हो गया original. Let's see that ये हुआ कि नहीं पहले. Okay, original is there. अभी हम क्या करेंगे? We will calculate the gradient along x. Okay, so if you see Sobel is basically first order differential, so you can calculate the difference along the x and then y. Okay, Sobel edge आपका दो पार्ट में था. Okay, horizontal and vertical दोनों के लिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं. So in that case, let me say edges x underscore x. Okay, this is going to be, I have got filters dot Sobel underscore h. This is going to be horizontal, and I say I am. ये हो गया horizontal. Sobel आपने calculate किया. You will say plot images, plot image, and I will just plot this. So let me say np dot clip, and I say edges underscore x. Okay, and default parameters आपके जो थे, and I'll give you the caption as Sobel underscore x. ये हो गया आपका, and then I say pylab dot subplot 2x2 का 2. Okay, ये हमारा कौन सा था? This was ओरिजिनल हो गया. ओरिजिनल के बाद हमें 2x2 चाहिए था ना यहाँ पे. अभी हम तीसरा, ये दूसरा हो गया. And then we will have subplot 3, and then we will calculate edges y. Edges underscore y is equal to filters dot Sobel underscore vertical. Okay, ये vertical हो गया, and I'm going to original image. फिर उसके बाद we will just plot this. So this time this is going to be underscore y, and this is Sobel y. And then fourth one, okay, we say pylab dot subplot 2x2 का fourth image. 2x2 का fourth image, and I say edges equal to filter dot
सोबल। ओके, सो पहले हमने इंडिविजुअली हॉरिजॉन्टल सोबल कैलकुलेट किया, फिर वर्टिकल कैलकुलेट किया, एंड देन वी आर हैविंग डायरेक्टली द सोबल। तो ये सोबल क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। ओके, सो इफ यू जस्ट ऐड देम टुगेदर यू विल बी गेटिंग this itself, and we are directly now using the inbuilt function for Sobel. And I say plot underscore image, फिर से आपका यही हम बुला लेते हैं। ओके, plot underscore image, and let's say हमने इसको क्या कहा है, edges बोला है ना, so we will call this as edges, and this is just simple Sobel. And then we will just adjust the vertical and horizontal space. So pylab dot subplot. If you don't do this, that's fine, but only thing sometimes it may overlap. Adjust w space equal to 0.1 and h space equal to 0.1. You can just change the value whatever you want. And then I say pylab dot show. ओके, क्या बोलता है अभी एरर, एंड डायमेंशन कौन से लाइन में, एडजस्ट एक्स में, इसमें एडजस्ट एक्स में सोबल अंडरस्कोर एच। एरर filters dot sobel underscore h। कोई तो चीज इंस्टॉल नहीं हुई है शायद। ओके, एक मिनट, हाँ, let me copy it and replace this once again। अभी भी है यहाँ पे एरर, मतलब मेरा फिल्टर नहीं आया है शायद, मतलब यहाँ डेफिनेशन में यहाँ कुछ कम है। वेट, लेट मी जस्ट रिप्लेस दिस। ओके, सो मतलब ये फिल्टर नहीं मिल रहा है उसको। ये किस में से है फिल्टर, सोबल हमारा फिल्टर्स में से हम यूज कर रहे हैं ना। कहाँ गया फिल्टर्स हमारा है इमेज में से। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इमेज टाइप में प्रॉब्लम है। ओके, इमेज इज मॉडिफाइड। ताजमहल में भी इशू है। ओके, ओके, just a second, an image ending। ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके, अगर मैंने इसको आई एम रीड यूज किया तो क्या होता है, लेट्स सी। एंड let me say I am equal to I am read images
slash Rajesh dot png. Okay, and I say I am equal to RGB to gray of I am. अब क्या होता है? Okay, okay, yes, we can use this code. एक मिनट, ये हम कर सकते हैं. इसको भी कमेंट करो. Let me say rajesh.png color. Okay, something has happened. एक कुछ बच गया. क्या बोलता है मैटलिब? नो एट्रीब्यूट सबप्लॉट एड जस्ट. सबप्लॉट एडजस्ट नहीं मिला उसको यहाँ पे. ठीक है, सबप्लॉट्स या. Okay, so now I think the error should be gone. Yes. Okay, so that's you see that different functions are expecting a different way. Okay, so हमने यहाँ पे image dot open use किया था तो उसमें वो नहीं मिल रहा था. So if you are using im read, okay, so through im read you'll say that you will be able to get this. Now what we have done is basically we have loaded our image and we have converted into grayscale, and then we are plotting. So now we are basically plotting 3 cross 2. So you just see the 1 2 3 3 rows and 2 columns. That's what a 3 cross 2. और उसका पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा. पहला इमेज जो है वो आपका क्या है? ओरिजिनल इमेज. दैट्स व्हाट वी जस्ट सी. ओके, ओरिजिनल इमेज आपने प्लॉट कर दिया. एंड सेकंड जो है रॉबर्ट्स कर रहे हैं आप. सो फिल्टर्स डॉट रॉबर्ट्स इमेज. ओके, सो Robert's edge will be found out, and this is what the Robert edge look like. Okay, and similarly next time you are going to calculate the char, then you have got Sobel, and then you have Privet. Okay, and then finally you have Laplace. So this is what is char, and this is Sobel, this is Privet, and this is Laplace. Now here in this case you will see that okay, the Sobel जो आपने calculate किया है, okay, this is what is basically the Sobel edge. Okay, this is char edge and this is basically Roberts. More or less okay, they may be looking same because of the type of image you are having. So मान लीजिए मैंने यहाँ पे ताज लिया, मान लीजिए ताज ले लेता हूँ, taj.png. Yeah, so these are the various edges that you have found because of the Roberts, char, Sobel, Prewitt and Laplace. Okay, and here in this case we are implementing the Sobel okay manually, एक horizontal में और एक vertical में and then total में. Okay, so this is what you are getting. This is horizontal. If you see that in the image the horizontal lines are being detected. Mustache का देखिए, eyes का देखिए, they are all horizontal. While in this case vertical वाले में, Y वाले में, you will see that the vertical specifically in the what is say stripes area आप देख सकते हैं यहाँ पे. Okay, so this is vertical one. Okay, while in this case it is trying to detect the horizontal one, and when you have the Sobel it is basically combination of both. So therefore if you just combine both of this, finally you will be getting these things. And now this is basically inbuilt function that you have used and you have obtained the Sobel. So Sobel along X, Sobel along Y, and the Sobel for the entire image. Okay, so this is what is the implementation of the various different types of filters. यहाँ पे हमने 4 फिल्टर्स देखे. हमने लेप्लास देखा है, प्रेविट देखा है, सोबल देखा है, शार देखा है, रॉबर्ट्स एंड ओरिजिनल. यू कैन जस्ट ट्राई आउट विथ अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस. दूसरा इमेज हमारे पास board.png है क्या? BOARD board.png है क्या? नहीं है, बोर्ड नहीं है शायद. ठीक है, रहने दीजिए उसको, वैसे रहने दीजिए. So touch. Okay, so we just implemented different edge detectors. Now now you will see that with this type of errors that we have just got, this is also attributed due to the different versions of the Python. Okay, so I'll just tell you that what I was just running, this was perfectly working fine for say earlier version of Jupyter Notebook or the Python version, but now in the later one it has been
basically deprecated and therefore दूसरे function के साथ आपको करना है. So in that case, if the code is there and if it is not running, you need to do some trial and error that which one is basically working for you. Okay, so earlier what used to happen, you used to convert it like this and then you used to use it. Now this imread is basically a quite generic function which will be able to do most of the things for you. Okay, so ये हो गया आपका practical number 7 जहाँ पे हमने edge detection technique such as Sobel ये देखा. एंड अब बचा है आपके पास दूसरा जो करना है हमें. लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट कैनी एज डिटेक्टर. ओके, सो वी विल इम्प्लीमेंट कैनी एज डिटेक्टर. कैनी एज डिटेक्टर हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड फॉर दैट वी विल have our say definitions. Okay, so यहाँ पे हम मैटप्लॉटली NumPy है, हमारे पास SciPy है. ओके, SciPy हमने ले लिया कि नहीं ले लिया है. फिर ND इमेज हो गया. ओके, सो लेट मी से अपना एक इंस्टेंस बना लेते हैं. लेट मी से फ्रॉम SciPy import ND image as NDI. फिर उसके बाद हम util फंक्शन यूज करेंगे. फ्रॉम SK image import random underscore noise. Okay, so because we are going to create noisy image ourselves, either you take the image which is already noisy या फिर आप अपना image create कीजिए और उसमें noise कीजिए. पहले के कुछ प्रैक्टिकल्स में हमने देखा था कि हमने लोड किया था इमेज और उसके ऊपर हमने रैंडम डॉट्स देके नॉइस बनाया था. नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल क्रिएट एन इमेज इटसेल्फ. ओके, एंड फिर उसके ऊपर हम हमारा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें नॉइस ऐड करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू डिटेक्ट द एजेस. नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी डन इन वेरियस वेज. आइदर यू हैव एन एक्जिस्टिंग इमेज and it is a noisy image and you are trying to detect the edges. Okay, so without noise, with noise. Okay, either with the actual image or created image. ये है हमारा basic idea. And then we will also say from SK image import feature. Okay, अब क्या हो गया इसमें, cannot import name random noise from SK image. Okay, SK image dot util. Okay, this is what you are going to do. Okay, so this is a definition that you have. Now we need to generate noisy image. Okay, so we are going to generate noisy image. Okay, so with it, without noise we कर सकते हैं आप, but we will just try to implement noisy image. So I'll say image equal to np dot zeros. Okay, we are creating our own image. Okay, which is basically using the np, that is numpy. I am creating zeros. Okay, and my image का dimension मैंने दे दिया 128 cross 128. So you are going to have an image of 128 cross 128. Okay, they are going to be all filled with zero. That means you are making a black image basically. And then I say d type equal to float. ये हो गया आपका just a second. So data type is equal to float and np dot zeros. ये हो गया आपका image. क्या हुआ, number is not defined. Okay, np dot zeros. T type is an invalid argument for zeros. np dot zeros के लिए ये invalid है. 128 d types. And then we will create an image. इसके अंदर we will be creating our figure. Okay,
and I'll say this is going to be say 32 to minus 32, comma 32 to minus 32. Okay, and we will put ones. That means we are drawing a foreground object in my image, and we are setting that value as 1. And then I say images is equal to ndi dot rotate. मैं मेरा जो इमेज है अंदर का उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इमेज ओके बाय 15 degrees, and I say mode equal to constant. Okay, these steps are not required if you already have an image. Okay, so but this time we are creating our own image and we are trying to do it manually. Now whatever the image is there, उसके अंदर हम blurring करने वाले हैं, and we are going to use the Gaussian blurring. Gaussian blurring कर रहे हैं आप. So Gaussian filter of original image, and आप उसका sigma का value दे रहे हैं. Sigma का value हो गया आपका 4. Okay, and then I say image equal to उस Gaussian filtered image में we are going to add random noise, random underscore noise. Now why these 3 steps are being done? Okay, पहले हमारा image है, okay, and we just rotated it so that there's going to be a different direction of the edges. Basically what we are doing, we are creating a square inside a black palette, एंड उस स्क्वायर को हमने आप पूरी इमेज को रोटेट कर दिया 15 डिग्री से, तो हमारा जो स्क्वायर है वो स्लैंटेड हो जाएगा. सो वी आर ट्राइंग टू शो दैट कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सारे एडजेस आप डिटेक्ट कर सकते हैं. नाउ सिंस वी हैव मेड अ स्क्वायर, so it is already an edge in this case. So what we will do is basically we'll be basically doing the smoothing. Okay, तो smoothing करने के बाद वो थोड़ा सा blurring हो जाएगा. That is why edges have to be found out. And in order to show that it is capable of removing the noise, we are going to add some random noise into the image. Okay, so like I say image के अंदर random noise आपने ऐड कर दिया, mode आपने कह दिया speckle. Okay, speckle noise, that means there are going to be some random dots like salt and pepper and so on, and I say mean of that is going to be 0.05. Okay, ये हो गया आपका random noise ऐड हो गया. And then we are going to compute the Canny filter, okay, for 2 different values of sigma. Okay, दो के लिए अलग अलग हम करेंगे. एक तो आप सिग्मा डिफॉल्ट ले लीजिए या फिर सिग्मा बदल के ले लीजिए. ओके, तो हमने पहले गॉसियन फिल्टर आपने अप्लाई कर दिया है, सो दैट वाज बेसिकली अ ब्लर्ड वर्जन. नाउ आई एम सेइंग एडजेस 1 इक्वल टू आई से फीचर्स डॉट कैने. ओके, एंड किसके ऊपर इमेज. तो इन दिस केस यू विल से डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द सिग्मा इज गोइंग टू बी टेकन, एंड देन वी विल से एडजेस 2 इक्वल टू फीचर्स डॉट Canny, I say image comma sigma. Okay, पहले वाले केस में हमने सिग्मा नहीं दिया था. Okay, because that is taking default value, and this time I am specifying my sigma value. Right? देखिए कोई एरर बचा है क्या? अभी भी एरर है. Features dot Canny, features is not defined. Features. Okay, features में feature. Okay, feature. Now what we will do, we will display the result. So we say figure and axis. We say plt dot subplot. Okay, so you can have this plot in different ways. हमने पहले तरीके से देखा, and इस तरीके से भी आप कर सकते हो. So you can just specify number of rows. Okay, I say 1, and I can say number of columns is equal to 3. 1 cross 3 basically आप बना रहे हैं, and figure size आप specify कर दीजिए. Figure size equal to, let me say 8 by 3. 80 by 30 का आप बना रहे हैं.
then we are going to have ax of 0, okay, dot im show, एंड इसमें हम दिखाएंगे ओरिजिनल इमेज एंड सी मैप कलर मैप हम लेंगे ग्रे। ये हो गया आपका एक जीरो और उसका टाइटल सेट करना है तो ए एक्स ऑफ जीरो डॉट सेट टाइटल, टाइटल आई से नॉइसी, सेट टाइटल हम देंगे नॉइसी इमेज और फॉन्ट साइज सेट कर दीजिए, फॉन्ट साइज इक्वल टू 10। अब देखते हैं क्या होता है। PLT is not defined, PLT dot subplot, PLT is not defined subplot, PLT हमने नहीं बनाया क्या? ओके हाँ हमने पाइलैब यूज किया है, एक काम करते हैं हम यहाँ अपना अलग बना लेते हैं। सो आई से import matplotlib dot py plot plot as PLT. Okay, now you see that आपने एक ब्लैक इमेज बनाया जिसके अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया था। ओके, इफ यू जस्ट सी हियर वी हैव मेड अ स्क्वायर of once and after that we have rotated it by some degrees, 15 डिग्री से आपने rotate कर दिया and then you added a speckle noise and you just see that there is a noise inside this. Okay, there is a noise inside this and edges are blurred if you see. Okay, that is what we have done and after that basically we are going to compute the candidates. So हमने edges 1 और edges 2 बना लिया है, पहला ओरिजिनल इमेज हमने दिखा दिया और दोनों अभी दिखाना बाकी है। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू शो द रेस्ट ऑफ देम एंड आई कैन जस्ट कॉपी दिस एंड लेट मी से पेस्ट दिस टाइम 1 एंड 1 और इस केस में हम पहला वाला एडजस्ट 1 दिखाएंगे and we will give the title as say canny filter. Okay, let me say this is going to be canny filter. Okay, let me say sigma का वैल्यू दे देते हैं, so $/sigma equal to 1। डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है and even we have not specified that। ओके, ये हो गया आपका सिग्मा। फॉन्ट साइज आपने 10 दे दिया। लेट्स सी सेकंड वाला, yes, now you see this is basically original noisy image, okay, and the second one is basically canny filter with sigma equal to 1 and you can see that there are edges that you could detect in those directions। थर्ड केस जो है उस केस में आपने सिग्मा की वैल्यू चेंज कर दी है। ओके, सो हियर इफ यू सी दैट थर्ड वन इज नॉट येट ऑब्टेन्ड बिकॉज वी हैव नॉट येट प्लॉटेड। नाउ वी कैन जस्ट कॉपी दिस एंड से दिस इज 2, 0 1 2 मतलब थर्ड वाले कॉलम के लिए आप कह रहे हैं एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू हैव एडजस्ट 2 एंड सिग्मा का वैल्यू आपका क्या है 3। Okay, and I just say run. Now you can see the edge detection capability for the given image. Okay, so we were capable of detecting the edge using the canny and this can work on even on the noisy image depending upon the noise and the combination of the sigma value. You will be able to detect the edges from the given image. Okay, so if you just want to change this sigma value, say for example हम यहाँ पे sigma का वैल्यू अगर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसको हमने 5 कर दिया।
So still not much difference because edge proper था वो. Okay, so that is still going to be having same 3 ही रखते हैं. If I just say sigma equal to 0.5 लेता है कि नहीं float value, let's check. Okay, now जैसे 50% जब आपने किया तो क्या हुआ? Okay, this is 1 से भी less है. So you were trying to detect edges और edge आप देखिए कहाँ पे मिल रहा है? वो जो noises थे, वो noises के edge आ रहे हैं आप देखिए यहाँ पे. That is what you are going to get for sigma equal to 0.5. मान लीजिए 0.8 किया मैंने, then that case you get this one. If I just say 1.8, so a little better. Okay, so you will just see that near about 2 to 3 जो है आपका वो value सही आता है. So this is how you are going to implement the canny. Canny के लिए आपको क्या करना है? Basically you have to call the canny. Okay, sobal के लिए आपको sobal बुलाना है, privet के लिए privet बुलाना है, and so on. So this is how you can just basically implement it properly. Okay, so okay. Okay, so this is your practical number 7, that is detection of the edges. Now let us move ahead and do another one, which is basically nothing but practical number 8. Okay, and that is इसी में कर लेते हैं से practical 8. Okay, practical number 8 is basically talking about morphological operations. Morphological operations. And let me just modify it. And this is 8 है आपका morphology. ठीक है. Now for this, let's say, so we need to have our declarations. तो हम इसको एकदम अलग ही कर देते हैं. And here I will be having my some definitions, and I will have my imports. Okay, so skimage.io import imread, numpy as np, sk color rgb to gray, matplotlib. Okay, for plotting, and there is one new one that I'm using here, sk image morphology. sk image.morphology import binary erosion and rectangle. Okay, so these are some things that we will be using. So you can apply these things manually or you can use the system built-in things. So we have already having our the plot image हमारे पास पहले से ही था. Now let us try to implement erosion. We say erosion of the image. So now I am going to say I am equal to RGB to gray. Okay, if you have already what is a gray image, then that directly you can work with that. I say images. May say you have something called as a clock2.jpg. Okay, in my folder I've got an image called as a clock2.jpg. And now what we will be doing, we will be basically creating a binary image with fixed threshold. Okay, अभी भी ये जो image है ये grayscale में है, and usually morphological operators are working on to binary images. Okay, चाहे वो dilation हो, erosion हो या opening या closing. However, you can apply it onto the grayscale images also, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे. So now we are saying that, okay, we say that create binary image with fixed threshold. Okay,
एंड आई से मेरा जो ओरिजिनल इमेज है, इमेज लेस देन 0.5, ओके। अगर 50% से कम है तो हम क्या कहेंगे, इसको 0 बना देंगे। एंड अदरवाइज इमेज अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो इन दैट केस हम उसको 1 कहेंगे। सो इन दैट केस यू हैव क्रिएटेड योर बाइनरी इमेज। नाउ आई एम सेइंग pylab.grep, ओके। पहले आया कि नहीं, चलो ठीक है, यस। नाउ वी विल जस्ट प्लॉट आवर फिगर। सो आई से pylab डॉट फिगर fixed size equal to 20, 10, okay। And I say pylab dot subplot 1 क्रॉस 3 हम प्लॉट करेंगे। 1 क्रॉस 3 का पहला इमेज क्या होगा, ओरिजिनल इमेज। सो प्लॉट अंडरस्कोर image, original image is IM and my title is original। ये हो गया आपका पहला इमेज। लेट्स सी, और की बोलते हैं भाई, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोड, प्लॉट इमेज आई एम ओरिजिनल, ओके। फिक्स साइज इक्वल टू 20, ओके, यस। 20, 20, 10, yeah, this is your original image and we want to perform the dilation and erosion. Remember, erosion is going to shrink the object and smaller objects are going to be removed, but it will also be shrinking all the directions, all the objects of all sizes, okay। So now this is original. Now we will be applying image equal to binary, okay, erosion, okay। So you are going to have a binary erosion for that। एंड बाइनरी इरोजन किस पे करेंगे आप, ओरिजिनल पे करेंगे, ओरिजिनल इमेज पे। एंड यू नीड टू स्पेसिफाई योर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज। सो आई एम सेइंग रेक्टेंगल 1, 5, you have specified the size of that। You can just change the size also। And then we will say pylab dot subplot, okay, and this is going to be 1 क्रॉस 3 का सेकेंड इमेज। और हम कहेंगे प्लॉट अंडरस्कोर इमेज। अब क्या कहेंगे हम, दिस इज, हमने बाइनरी इरोजन किया ना, तो लेट मी चेंज दिस नेम ऑफ दिस। सो आई एम 1, ओरिजिनल इमेज कर दिया और इसका टाइटल दे देते हैं, आई से इरोडेड विथ रेक्ट साइज 1,5, ठीक है। ये प्लॉट हो गया। नाउ लेट्स से रन करके देखते हैं क्या हुआ। या फिर लिटरल किधर है, यहाँ के बाद ओके आ गया। ये हो गया ओरिजिनल। ये है image eroded with rectangle of size 1 this। Now just see that erosion is removing small objects, so therefore ये देखिए छोटे छोटे जो objects थे ये वो निकल गए हैं। Depending upon the type of structuring element जिस direction का आपने लिया हुआ है उस हिसाब से ये आपका remove हो जाएगा। Okay, so now let me just make this change। I can make it erosion, let me say 15, and this is 1,15, and this is going to be third one, okay। run। now just see, जब आपने 15 का किया तो in that case bigger objects were removed, even this was being removed, okay। that is what you can see। और मान लीजिए मैंने इसको 5,1 किया तो you see what happens। in the previous case if you see some of this horizontal lines were remaining, यहाँ पे देखिए vertical remaining, that means 1 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस 1, मतलब horizontal वाला है या vertical वाला है वो आप देखिए remove हो रहा है। okay, so let me just show you the change। okay, आप देखिए अभी, you see that horizontals
आर रिमेनिंग, बिकॉज आपका जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था वो कैसा था, वर्टिकल डायरेक्शन का था, तो वर्टिकल वाले रिमूव हुए। एंड इस केस में 1 क्रॉस 15 है, सो इन दैट केस दिस, नाउ इफ आई जस्ट से 5 क्रॉस 5, okay, so accordingly things are going to change. So let me just keep it 1 × 5 itself. So you have basically eroded the image, okay, with a different size of the mask. And one thing you can just see that erosion की वजह से, okay, this is also getting eroded. Okay, आप देखिए ये यहाँ पे भी पतला हो गया, और not only the object has gone. If I just say 15,1, okay, यहाँ ये पतला है, आप देखिए. Now I am saying this. एक मिनट, हमने किसमें किया इमेज, यस, ठीक है. सो दिस इज इरोजन. डायलेशन अगर आप करते तो क्या होता, डायलेशन में दिस कुड हैव एक्सपैंडेड, ओके, एंड डायलेट होने के बाद वो थोड़ा और थिक हो जाता था. नाउ लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट डायलेशन. Dilation, when you are implementing dilation, so this time we will be importing binary dilation. यहाँ पे हमने binary erosion यूज किया था. So I will say from sk image dot morphology, I say import binary dilation. Okay, and I will also input disk. Okay, there is also an inbuilt feature called as a disk that is going to tell you the what is the size of the disk or the structuring element. In the previous case, we have used a rectangle basically. Okay, so 1 × 5 or 5 × 1 and so on. Now we will load our other things. So let's say sk image import img as float. Okay, and I will load my image img as float, because certain operations require you to have float type. So you can just use the appropriate function im read. Okay, and I'm going to have images slash, let me say tagore, जो हमने क्लास में देखा था वही हम इमेज ले रहे हैं. Okay, tagore.png, tagore, tagore.png, ये हो गया. Now we are creating our image, and we are going to basically create a binary image. Okay, so we will be reading all the images, and उस इमेज का जो आपका थर्ड RGB चैनल जो है उसमें से हम लास्ट वाला एक ही चैनल हम यूज करने वाले हैं, और उस चैनल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी और इसमें. ओके, सो विल जस्ट से em equal to 1 minus im, okay, for all rows, and I'll take the third one, and then we'll just convert it to im of im less than equal to 0.5. अगर है तो हम इसको 0 कर देंगे. And if you are having already a binary image, you can directly proceed with this. I'm just showing you how to do it. Okay, im is greater than 0.5, so I will say it is going to be 1, and then I say pylab dot gray. Okay, I say pylab dot figure and fig size equal to whatever size you want to give. Say for example 2:1 में देते हैं 18:9, and then you are going to have pylab dot subplot, and see 1 × 3 × 1 रहेगा आपका, और उसमें हम शो करेंगे pylab dot im शो, हमारा क्या था, ओरिजिनल इमेज im. ठीक है, एंड देन इसके बाद हम इसका टाइटल भी दे देते हैं pylab dot title टाइटल, एंड आई एम सेइंग ओरिजिनल, और उसका साइज दे देते हैं साइज इक्वल टू से 20.
ठीक है, ये हो गया आपका सब प्लॉट। ये देखिए, ये ओरिजिनल इमेज है आपका, and this is a Tagore image, and where you can see that near the beard you have got some holes. Okay, you can just see that there are holes. Okay, near about here you have some holes here. So when you are going to apply the dilation, all these holes are going to be filled, or the gaps are going to be filled. At the same time, you'll find out the other places are also going to get dilated. Okay, so now let us move ahead and do something else. Now we say um, uh, चलिए डिफरेंट डिस्क साइज के लिए करते हैं. सो आई से फॉर डी in range 1 2 3. So basically you are going to plot it for different values of the disk. Okay, so 1 2 3 में हम करते हैं. And so basically 1 and 2 आप लेंगे. Okay, so 1 and 2 आपको वैल्यू मिलेगी. Or you can use list also to specify the what is it disk size. So I'm just using the iterating variable for that. Now I say pylab dot subplot 1 class 3 में okay d plus 1. तो इसी को हम यूज कर रहे हैं एज अ इंडेक्स फॉर माय इमेज. And at the same time I will make my modified image as I am equal to binary dilation. Okay, binary dilation So I am saying इसको हम डिस्क ऑफ साइज 2 इंटू डी कर देते हैं. तो पहले डी जो आपका है वो 1 है. So 2 into 1 is going to be was 2. So size of the disk is now 2. And I say pylab dot IM show. Okay, so pylab dot IM show you are going to have. And once you have pylab dot IM show, एंड आप मॉडिफाइड वाला दिखाने वाले हैं. इसका टाइटल दे देते हैं pylab dot title title, and I'm saying dilation with disk size. Okay, let me say equal to, और इसके अंदर लिखते हैं equal to this. And I'll say plus str. क्या है हमारा डिस्क साइज 2 स्टार डी है, तो 2 स्टार डी मतलब 2 1 2 एंड नेक्स्ट टाइम 4 होगा. सो आई से साइज इक्वल टू 20. ये आपका टाइटल का साइज हो गया. ओके, सो ये हो गया आपका. एंड लेट मी से pylab एक्सेस ऑफ नहीं रखते, चलो ठीक है. देन आई से pylab dot show. इवन इफ यू डोंट डू दिस, स्टिल यू विल बी एबल टू सी द आउटपुट. क्या हो गया? आई एम 1 चाहिए. आई एम 1. That's why I say original dilation with this size of 2 and this size of 4. So you can just see that when you have done the dilation with the this size of 2, certain holes have been filled. Okay, but still there are some holes still remaining. आप देखिए ये सारे रिमूव हो गए थे, यहाँ के रिमूव हो गए थे. Okay, and so on. And even at these places you'll see that things have affected, because we just said that जब dilation कर रहे हैं तो सारे object आपके dilate होते हैं. In that case, in these places also you see that how it looks like. Okay, while the holes have been removed, but the object also becomes dilated. Now, depending upon the size of the disk, okay, the size of the gap that will be filled will be determined. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत बच गया है. At the nose place यहाँ पे कुछ बच गया है, because this was basically dilated and बस this dot is remaining. Okay, even at this place there is dot and there are some dots. Now, if you just make it disk size 4, so in that case this what was remaining in the disk size of 2 has been eliminated. नोज के पास का डॉट चला गया है. इवन दिस बियर्ड के पास का ये जो पोर्शन है वो चला गया है आपका.
Okay, even eyes में आप differences देख सकते हैं, and at the mark of the hairs also you can see. So this is how dilation is going to basically affect, okay, the output. So we just saw how to perform the erosion and how to perform the dilation. Okay, so erosion and dilation. Now what is remaining is, let us try to perform opening and closing. So let's say opening. Opening क्या था? Opening was nothing but dilation of erosion. Okay, dilation of erosion था opening, and closing the erosion of dilation. So in case of opening, what will happen? You will retain the bigger object in their original shape, while the smaller objects are going to be removed. Okay, so we will just uh, import from binary from skimage dot morphology. Okay, we say import binary opening. Okay, binary closing. Okay, and some binary erosion. Binary binary dilation, dilation और disk. ठीक है, ये सारी चीजें आपने बुला ली. लेट मी सी दैट इफ इट डायलेशन का स्पेलिंग रॉन्ग है. डायलेशन. Okay, so we could import that, and then I will say I am equal to RGB to gray. I am read. मेरे images में से there is something called as circles dot jpg. Okay, the same example which we have took in the class. Now I will just copy that पहले वाला जो हमने यूज किया था. Let me just say conversion कर लेते हैं, just to be safer side that it is now binary, and then you can specify the figure size. So let me say pylab, and ये आपका ये हो गया. मैंने कह दिया pylab फिगर हम उसको स्क्वायर ही रखते हैं. इन दैट केस से 20,10 थोड़ा बड़ा रखते हैं. And then subplot we are going to do. Okay, so we will say subplot original, and title भी दे दिया हमने. Let's use our function. Okay, काम करते हैं हम अपना function use करते हैं. So pylab dot. Okay, you can do it that way also. Okay, or this way also. Subplot 1 cross 3 comma 1. Okay, I say plot image I am, and I say original. ये आपका original होगा. Okay, you can call your own function, या फिर आप एक एक करके जैसा अभी पहले लिखा था हम वैसे कर सकते हैं. Okay, and let's see, plot करके देखते हैं कि बड़े n is not defined, im is not defined. ठीक है, so now you see that this was the original image, okay, which has got some objects. Okay, object is nothing but circles of filled circles of different sizes, and I want to perform opening matlab dilation of erosion. Erosion will be removing the small objects, and the dilation followed by this is going to retain the bigger objects. So I am basically interested in retaining these bigger circles, and smaller circles have to be removed. Okay, so for that what I'll do, I will say I am 1 equal to binary opening.